Climate change. Then I'll start, thank you very much. The topic is climate system. As you all know, I mean, it's a very basic thing. It's the foundation of everything related to weather, climate, whether it's monitoring or prediction or scenario building and projections. But before we end the climate change, which is a very hot topic these days. So to understand all this, we must first know the basics. So I'll start from the very basics. As you all know, weather and climate have they have a profound influence on human beings, and it's very essential for the health, for food production and well-being of human beings. Human activities already, and at the same time, you have an influence of weather and climate on human beings and the entire planet Earth, the various ecosystems. But at the same time, human beings also have an impact on climate. So it's both ways. So this is what is very important. Earlier, people were just talking about the impact of weather and climate on human beings. So in order to understand, detect, and eventually predict the human influence on climate, we need to know about the basics of the climate system. So as you know, weather, we have two things, weather and climate. Weather refers to changes, what we call as fluctuating state of the atmosphere. So this is very, very important thing. One should understand how this weather things keep on changing. But then we have very limited knowledge. We have very limited knowledge about these weather systems and their predictability. Before this, I must explain you to the different scales of the weather systems. You have micro scale, mesoscale, synoptic scale, and global scale. When we say weather systems, different weather systems have they affect the different scales. Like for the smallest weather system is your micro scale weather systems. Micro scale means a weather system which operates over a very small area, even a 1 meter or so. And within seconds, this weather system is over and it has an impact. So such kind of weather system is called micro scale weather system. Next, we move to mesoscale weather system. That means system where, it from few hundred meters to few kilometers, maybe 10, 20, 30, 50 kilometers up to that. So this is called mesoscale weather system. And the example of such weather system is thunderstorm. Tornadoes, you must have seen. They affect a very limited area, but mainly it is a thunderstorm which falls in this category. Okay. From there, we move to synoptic scale. Synoptic scale, again, or regional scale, you may also include in that. So cyclones and all this, and the area affected is like maybe 1,000 kilometer or less, that kind of area. So those are synoptic scale systems. Then maybe you have global scale systems where you have trade winds affecting the entire globe, especially the area between your Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So entire area. So those are your global scale systems.
So these are different systems. So now, depending on the weather system, it is easier to predict a system which life cycle is short. But again, it has certain limitations to it. But as you have something, it's difficult to predict more than a week or two. So this is one, small aspect of weather. And then we come to climate. Climate is something, which is sum total of weather over a period of time. Climate is just like your calendar. Your calendar, January, February, you see the calendar. So it's just like climate. And it is sum total of weather over a period of time. We should always talk about climate over a long period of time. 30 is also too small a period. But because, why I say it's less, even 100, it's okay. So, if you have 500 years data or 1,000 years data, then entire variations, climatic variations will be captured. But most of the changes which you come across in your day-to-day life are mainly climate variability, not climate change. Climate variability refers to the changes which occurs in the climate because of natural causes, like your sun solar activity. Solar activity may increase or decrease depending on the radiation which is reaching the Earth's surface will change. So that is one reason. So these are all some of the natural causes, or maybe shifting of the axis of rotation of Earth's axis. So all these can bring changes in the climate, and they are due to natural causes. And such changes in the climate we call it climate variability rather than climate change. Now let us discuss mainly the climate system. Again, now climate of a place is dependent on many factors. The first and the foremost factor is your latitude of the place. आप किस latitude पर हैं? मान लीजिए आप 0 degree equator के आसपास हैं, तो naturally you are surrounded by oceans. There is a lot of moisture available there. These areas are energy surplus areas because continuous sun is overhead, and at the same time you have lots of high temperature and rain. So therefore vegetation is also a tropical rainforest. While at the same time you go to the poles, temperature is low and even rainfall is low. So you have maybe Antarctic or Arctic desert biome. So this is how things change. Next, your factor is latitude, and then is altitude. Altitude is height above the mean sea level. So lower temperatures, and you may be having different kind of weather also in those regions. So your latitude as well as altitude influences the climate of a place. In addition to that, third is your nearness to the sea. If you're staying near to the sea, what will happen? You have lots of humidity, you have sea breeze and land breeze influencing your area. And depending on if you have the mountains also, like Western Ghats and the northeastern regions, so the particular topography or orography as we refer to it, that also enhances the rainfall of the region. That is why you have north is Meghalaya and Shillong, that area which Garo Khasi Hills gets lots of rains. तो लैटिट्यूड जो है आपकी प्रभावित करती है आपके क्लाइमेट को. और दूसरा फैक्टर है आपके, जैसे मैंने बताया, अल्टीट्यूड, कि आपका सी लेवल से आप कितनी ऊंचाई पर हैं. जितने आप ऊपर जाते रहेंगे आपका वेदर क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा. तो इसलिए ये जानना बड़ा जरूरी है. तीसरा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है समुद्र से कितनी दूर है या कितनी पास है. जो एरिया समुद्र से बहुत दूर होंगे तो वो थोड़ा सा वेरिएशंस एक तो बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, जिसे हम डायरनल वेरिएशन कहते हैं. और जो स्टेशन बिल्कुल समुद्र के पास है वहां पे देखेंगे आप मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं. तो ये तीसरा फैक्टर हो गया. चौथा आपका वेजिटेशन हो गया. आपके वहां किस तरह, जब जहां ज्यादा पेड़ होंगे आसपास, आपने खुद ही देखा होगा, उसकी छाया होती है, पेड़ों से जो पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है, वो वहां के माइक्रो क्लाइमेट को थोड़ा ठंडा कर देता है. इसलिए आप देखेंगे घर के आसपास आपकी छत पे पेड़ लगे हुए हैं तो आप ठंडा होगा. और जहाँ बिल्कुल पेड़ वेड़ नहीं है, आप देखेंगे जो कि अर्बन सिटीज की हम बात करें आज की डेट में, जो हम शहर हमने बसा दिए हैं, वो सारे बिल्कुल कंक्रीट जंगल हैं. तो कंक्रीट जंगल होने के कारण जो आप देखते हैं कि वहां पर तापमान बिल्कुल हाई रहते हैं. तो इसीलिए सिटी के टेम्परेचर जो होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू द आउटस्कर्ट्स, यदि आप रूरल एरियाज में चले जाएं कंपैरेटिवली. इसके अलावा क्लाइमेट जो है हमारे हर सीजन में बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे हमारे पास, जैसे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमारे जो पूरे साल भर को 4 सीजन में रखा हुआ है. तो उसमें हमें 4 सीजन मिलते हैं. जनवरी फरवरी को हम बोलते हैं विंटर सीजन, जो कि बहुत ठंड पड़ती है. फिर आ जाता है हमारा मार्च अप्रैल में,
जो हमारा आ जाता है उसको हम कहते हैं हॉट वेदर सीजन और प्री मानसून सीजन, मानसून से पहले का समय, और जो गर्मी का सीजन जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, मार्च, अप्रैल और मई। तीसरा सीजन हमारा आ गया जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जिसे हम कहते हैं मॉनसून सीजन। मॉनसून भी कौन सा मॉनसून? साउथ वेस्ट मॉनसून, यानी कि जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमारे यहाँ आती हैं हवाएं, नमी लेकर और वर्षा देती है, उसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है। ये 4 महीने रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करें तो नेक्स्ट सीजन आ जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जो सीजन है इनको हम कहते हैं पोस्ट मानसून सीजन और नॉर्थ ईस्ट मानसून। इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्रा, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका और केरला के थोड़ा सा पोर्शन को प्रभावित करती है। वो मानसून उसी रीजन को प्रभावित करता है। तो ये आपका सीजन कैसे, सीजन जो बदलता है, तो और ईयर टू ईयर और डिकेड टू डिकेड भी चेंजेस होती हैं। जैसे इस बार आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश मिल रही है अभी आपको जून से, और वहीं बात करें दक्षिण भारत की तो इस बार दक्षिण भारत में कम मिल रही है। तो ये चेंजेस होती रहती है। ये ठीक उल्टा होता है, सामान्य अभी तक होता है कि वहां दक्षिण भारत में ज्यादा हो जाती है और यहाँ कम होती है। तो ये सब वेरिएशंस रहती हैं। दिस इज वी कॉल एज ईयर टू ईयर वेरिएशन। ऐसे डिकेडल वेरिएशंस होते हैं। तो ये सब चेंजेस हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। और अब बात आती है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है कि जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रही हैं, मतलब कि डिकेडल टर्म पे, और ये परसिस्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, अबव नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हम क्या क्या कहते हैं? जैसे आज का टेम्परेचर, कहीं दिल्ली का टेम्परेचर मान लीजिए हाइपोथेटिकल है 35 डिग्री। 35 हमारा सामान्य है। और सामान्य कैसे आती है ये फिगर? हम आज का तापमान और पिछले 30 साल के तापमान, सॉरी पिछले 30 साल के तापमान को जोड़ते हैं और 30 से डिवाइड करते हैं। जो फिगर आई वो आई 35, यानी कि 35 पिछले 30 साल के तापमान, आज ही के दिन के तापमान को हमने जोड़ा और 30 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक फिगर आ गई 35। हम कहेंगे आज का जो तापमान है ये सामान्य तापमान है, अधिकतम तापमान दिल्ली का इतना होना चाहिए। तो जब ये कम होगा तो हम इसको बोलेंगे सामान्य से कम तापमान है, और ये जब ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे सामान्य से ज्यादा है तापमान, है मोर देन नॉर्मल, बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल। हाँ, मान लीजिए सडनली हो जाता है टेम्परेचर 45 डिग्रीज, which normally doesn't happen, तो देन आप कहोगे यार ये तो एबनॉर्मल चीज लग रही है कुछ, और ये कंसिस्टेंटली होने लग गया अब साल 10 साल, तो देन यू विल कॉल इट क्लाइमेट चेंज। और ये जो क्लाइमेट चेंजेस की हम बात कर रहे हैं वो हो रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सिंग्स। बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्सिंग क्या है? एक्सटर्नल फोर्सिंग में एक तो है हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम कर रहे हैं, और दूसरा जो है हमारा लैंड यूज, लैंड कवर चेंज। जिस तरह से हम लैंड को एग्रीकल्चर, मतलब फॉरेस्ट को काट कर हम जो है एग्रीकल्चर कर दे रहे हैं, तो ये सारी जो चेंजेस हो रहे हैं इसको कहते हैं लैंड यूज चेंजेस। उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ता है, और उसको कई बार हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी कहते हैं। जो तो ये हमारे बेसिकली जो दो एक्सटर्नल फोर्सिंग्स हैं, मैंने बात कर रहा, एक तो ग्रीन हाउस गैसेस और दूसरा आपका लैंड यूज चेंजेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मगर ये दोनों चीजें आगे भी कैसे प्रभावित होती रहेंगी, उनको कैसे समझें हम, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट साथ साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है कि पॉपुलेशन, नेचुरली आप कितनी मकान बनाने, कितनी इंडस्ट्री लगानी, तो पॉपुलेशन इंक्रीज जो चेंज होगी उसको उसको हमने समझना है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप इकोनॉमिक चेंज, कैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, कितनी इंडस्ट्रियां और लगने वाली हैं, कितने हाईवेज बने, क्या होगा, वो भी बहुत कोई इजी नहीं है प्रोडिक्शन करना। उसके साथ साथ आ गया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी। टेक्नोलॉजी नए से नई टेक्नोलॉजी, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जैसे कि आप बैटरी ऑपरेटेड कार की बात कर रहे हैं, और पोल्यूशन ही नहीं होगा, आपको गैस की जरूरत नहीं होगी, और आपको मतलब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं होगी, अल्कोहल की जरूरत नहीं होगी, पोल्यूशन कम भी हो सकता है। हु नोस कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हम शुरू कर दें जिससे बढ़ना शुरू हो जाए। और ह्यूमन नेचर जो है, उसके ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह की वो करेगी, क्या क्या करेंगे आगे, तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। फिर अब मैंने जैसे पहले बताया था आपको कैसे चेंजेस होते हैं, नेचुरल में आपके सोलर इनपुट में भी चेंजेस आ सकते हैं, वो नेचुरल कॉज है। सनस्पॉट एक्टिविटी बढ़ गई, ज्यादा रेडिएशन आ रही है, कम रेडिएशन आ रही है। उसके साथ साथ आपका जो है कहते हैं मे बी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, कि एटमॉस्फेयर हैज ए सेट कंपोजिशन, इट हैज वेरियस गैसेस सच एज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन करीब करीब आपकी कितनी 78% रहती है, ऑक्सीजन जो है करीब करीब 21% रहती है। तो कंपोजिशन कैसे चेंज हो रही है, एरोसॉल्स, डस्ट पार्टिकल्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस तरह से हम एमिट कर रहे हैं,
ट्रांसपोर्ट से जो पोल्यूशन निकल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, जिनके चलते ओजोन नीचे बढ़ रही है, तो ये सारी जो कंपोजिशन में जो बदलाव आ रहे हैं एटमॉस्फेयर के, ये मतलब कि बड़ा मुश्किल है इनको कैप्चर करना, और ये हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, कोई डाउट नहीं है। और तीसरा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वो तो बात तय है कि भाई जब तापमान बढ़ेंगे धरती के, जिसके हम कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं और वो ज्यादा मतलब कि रेडिएशन को ट्रैप कर रही हैं, और ट्रैप ज्यादा करेंगी तो आपका टेम्परेचर धरती का बढ़ेगा, और जब वो टेम्परेचर बढ़ता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर ज्यादा एवापोरेट होगा और ज्यादा क्लाउड बनेंगे, ज्यादा बारिश होगी, तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है जिसे हम कहते हैं वो फास्टर हो जाएगी, कुछ लोगों का मानना है। अब दोबारा से एक बार चलते हैं कि जो क्लाइमेट सिस्टम है, क्लाइमेट सिस्टम को यदि हम जानना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट स्फीयर्स हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो है एटमॉस्फेयर, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट तो पूरी फिनोमेना ही एटमॉस्फेयर का है। उसके अलावा और भी हमारे पास स्फीयर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगला स्फीयर है हाइड्रोस्फीयर। एक हो गया एटमॉस्फेयर जिसमें एयर आ गई, और जितना भी पानी है, समुद्र हो गई, नदियां हो गई, तालाब हो गई, लेक हो गई, वो कहलाता है हाइड्रोस्फीयर आपका। तो एक और स्फीयर आ गया हमारे पास, उसकी जानकारी भी हमें जरूरी है। तीसरा उसके बाद आता है लिथोस्फीयर, आपकी जमीन, धरती, उसकी सॉइल कैसी है, उसमें कितना मॉइस्चर है, तो वो थर्ड हो गया आपका लिथोस्फीयर। चौथा स्फीयर आ गया आपका, कहते हैं बायोस्फीयर, यानी कि आपके पौधे, चाहे वो पौधे मेरीन हो या टेरेस्ट्रियल हो, वो पौधे भी मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। फिर आ गया पांचवा आपका स्फीयर क्रायोस्फीयर, जो आपकी पूरी आइस है, यानी कि आइस हो गई आपकी हिमालयस पे हो गई, आर्कटिक पे हो गई, अंटार्कटिक हो गई, मेजर आइस वाले रीजन हैं। तो यदि आपको क्लाइमेट को समझना है तो आप सिर्फ जो है एटमॉस्फेरिक मॉडल से नहीं समझ सकते, उसके लिए आप चाहिए अर्थ सिस्टम साइंस मॉडल, यानी कि पूरे अर्थ को एज एक मान के चलेंगे, और उसमें अंदर जितने अलग अलग इकोसिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, वहाँ मेरीन इकोसिस्टम्स हैं, वहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, लिथोस्फीयर, आयोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, ये सारे स्फीयर्स को समझना है, उनको सारा पैरामीटराइज करना, मॉडल डाल के सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जब जाके कहीं अर्थ सिस्टम साइंस मॉडल बने। तो ये जो मॉडल्स हमने डेवलप करें, ये परफेक्ट नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। वी आर ट्राइंग टू इमिटेट नेचर विद दीज मॉडल्स, तो टेक दिस ऑल विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो ये एक चीज हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। तो उसमें आप देखेंगे सन है, सन इज द आपके करीब करीब आई डोंट नो 93 मिलियन माइल्स अवे। अब सन की जो रेडिएशन हमारे धरती पर आ रही है उसको हम कहते हैं इंसोलेशन, जो कि हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो व्हाट वी कॉल इट, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और ये रेडिएशन ज्यादा कहाँ आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो यहाँ पे सन इज ओवरहेड बिटवीन दिस टू लैटिट्यूड्स। अब रेडिएशन जो आ गई, वो रेडिएशन क्या हो रहा है, वो रेडिएशन का भी, रेडिएशन बजटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, जिसके चलते हम बात कर रहे हैं। तो जितनी रेडिएशन आती है, मान लीजिए 100 यूनिट्स आ रही है सन से, तो 100 ही वापस जानी चाहिए। यदि वो नहीं जाएगी या किसी तरह से ट्रैप हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो एनर्जी जो है आना और जाना। अच्छा, अब रेडिएशन तो आ गई, जब वो आती है तो सीधा इट विल स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। कुछ पोर्शन तो जो है 30 डिग्री, जैसे 100 यूनिट्स आई उसमें 30 तो इमीडिएटली वापस चली जाती है, जिसको हम कहते हैं प्लैनेटरी एल्बिडो। तो ये सारी जो चीजें, उनकी सरफेस फीचर जो है वो डिसाइड करते हैं कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब होने जा रही है और कितनी वापस जानी है, और वही टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, वही इन टर्म्स मतलब कि आपके एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को भी प्रभावित करते हैं। ओके, अब आ जाए दोबारा से रेडिएशन। अब रेडिएशन तो आ गई, और जो सन से जो मेनली रेडिएशन आ रही है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। मेजर कंपोनेंट उसका है शॉर्ट वेव रेडिएशन, क्योंकि सन का टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री केल्विन, ये रेडिएशन धरती पर पड़ी, लैंड सरफेस बिकम्स हॉट, और वो फिर अपनी एनर्जी को एयर को देगा उसके टच में, नेक्स्ट एयर, दैट इज हाउ द रेडिएशन टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अप। और जो रेडिएशन, सन की रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर ली थी अर्थ ने, अर्थ itself now after absorbing starts reflecting it back. So mainly radiation coming from the sun is short wave radiation, and the radiation which is going away from the earth is mainly long wave radiation. Second thing is that जब
धरती गर्म हो गई तो यानी कि रेडिएशन ने इन्फ्लुएंस क्या किया, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस किया। और जब टेम्परेचर ने क्या किया, जब टेम्परेचर ने एयर को गर्म कर दिया, पानी को एवापोरेट कर दिया, और हवा जो गर्म हवा है वो हल्की है, और वाष्पित हवा जो है मॉइस्ट एयर वो भी हल्की है। तो हल्की होने के कारण वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइटर, तो ये क्या हो गया, इट स्टार्ट्स मूविंग अप। जब मूविंग अप हो गए, जहां से हवा ऊपर उठ के चली गई तो नीचे क्या रह गया, वैक्यूम और लो प्रेशर। अब जहां लो प्रेशर बन गया, साइड में हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड्स कहाँ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो प्रेशर ने किसको इन्फ्लुएंस करा, विंड को इन्फ्लुएंस करा। अब विंड डिपेंड करता है, वो यदि बंगाल की खाड़ी से आ रही है, पूर्वैया है, ईस्टर्ली है, तो मॉइस्चर लेके आएंगी। इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट तो गर्म होंगी, और यदि पहाड़ों से नॉर्दर्ली हवा आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, तो वो कहते हैं ठंडा लेके आएंगी अपने साथ। अब नमी वाली लाएंगी हवा तो वो बारिश दे देंगी, और जो गर्म आएंगी और ड्राई होंगी वो आपके टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। तो सी हाउ रेडिएशन हैज इन्फ्लुएंस्ड temperature, temperature influences pressure, pressure influences wind, wind in turn influences rain. तो ये देखिए आप कितनी कम्प्लेक्सिटी है, कंपोजिशन भी इन्फ्लुएंस कर रही है, लैंड यूज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका एटमॉस्फेयर को, आपके कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सिंग, ग्रीन हाउस गैसेस जो आप कम कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सब चीजों को समझना, सारे इंटरेक्शंस को आपस में समझना, ये इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो आपको मालूम है सन, जैसे मैंने आपको बताया ओवरहेड है, ऊपर है, उसकी रेडिएशन आई, धरती पर पड़ी, धरती का तापमान गर्म हुआ, उसके जो टच में हवा आई वो भी गर्म हो गई, हल्की होने के कारण वो क्या होगा, ऊपर को उठेगी। ऐसे ही पानी जो है, पानी एवापोरेट होगा, खासकर जहां जहां पानी है वो एवापोरेट होगा, हल्का होने से वो भी ऊपर उठेगा। अब वार्म एंड मॉइस्ट एयर बीइंग लाइट, हल्की होने के कारण वो ऊपर को उठेगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है। तो जब टेम्परेचर वार्म और मॉइस्ट, गर्म और नमी वाली हवा जब ऊपर को उठेगी और उसका जो तापमान गिरेगा तो क्या होगा, तापमान गिरने से कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन ये नहीं, छोटी छोटी बूंदें बनेंगी, और बूंदों के गुच्छे को हम कहते हैं बादल, बादल बनेंगे। और इस बादल में क्या होगा, ये छोटी छोटी बूंदें आपस में टकराएंगी, क्योंकि हवाएं भी ऊपर आ रही हैं, वो आपस में टकराएंगी और जुड़ेंगी और बड़ी हो जाएंगी, और उनको नीचे, धरती जो है ग्रेविटी है नीचे की ओर खींचेगी, मगर हवा के जो करंट्स है वो उसको फिर ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाएंगी वो फिर आपस में टकराएंगी और बड़ी हो जाएंगी, फिर नीचे की ओर ग्रेविटी खींचेगी उनको, फिर एयर करंट्स फिर ऊपर ले जाएंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इट गोज ऑन, एंड फाइनली व्हेन द ड्रॉप इज बिग इनफ इट फॉल्स डाउन एज रेन। तो अब दोबारा से मैं बताना आपको ये चाहूंगा कि कैसे आपके वेदर और क्लाइमेट जो है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो चेंजेस हो रही हैं निरंतर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एटसेट्रा, वी कॉल इट वेदर। एंड क्लाइमेट इज लाइक कैलेंडर, it is like your February climate calendar means it changes less. It's although climate also changes, it's not fixed. Over you had ice ages. If you go decades back, hundreds of years back, it was different. So there is no that many people think climate doesn't change. No, climate also changes, and it can change drastically over a huge. I mean, millions of years. It can change totally drastically, right? So weather and climate. So climate, and what is climate? Climate is sum total of weather over a period of time. So I think I'll stop here. We will take questions, I think, at this stage itself, and then slowly as we build upon it, many things, new things will come up. फर्स्ट क्वेश्चन इज, और मुझे लग रहा है सर ये क्लाइमेट चेंज से, हाउ कैन वी कंट्रोल क्लाइमेट चेंज कैलेमिटीज? हालांकि ये सेशन है एक बाद में सर, फिर भी अगर आप एक मिनट में इनको कुछ। कोई बात नहीं। देखिए, क्लाइमेट चेंज की जहां तक बात हो रही है, उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। उसकी जो उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, the harmful impacts, how to get rid of them, उनको कैसे हम कम कर सकते हैं, how can we reduce? There are two things, one is adaptation, other is mitigation. Mitigation means we have to reduce the greenhouse gases. Second thing is adaptation. Adaptation is human being, right from the day he arrived on this planet, he has been adapting. आप भी घर में भी हैं, किसी से हर रोज कहीं गाड़ी में चल रहे हैं, when you're traveling or you're in the family, you adapt. So you have to adapt.
And then, as I said, adaptation and mitigation. And then the kind of energy sources you are using. Now, if you're in a house daytime, why should you put on the lights? You can use a natural light. Similarly, if you can walk to a marketplace, you just walk down. Or if you want to use a car, use an electric car. Change your lifestyle. Don't make it energy intensive. Make it less and less energy and be natural as far as possible and make your life simple. I think I'll stop here. Next question. The next question is, kindly explain the specific region between the temperature and rainfall. Specific reason. Yes. Very simple. See, this is what we study in the even geography classes in the 5th standard, 7th standard. Hydrological cycle. Okay. First thing, as I told you, the radiation which falls on the ground or on the water, it evaporates the water. Water vapor being lighter, warm air being lighter, it starts going up. As it goes up, what happens? Its temperature decreases. And as the temperature decreases, what happens? There is a condensation. You must have observed when you pour the water from the refrigerator in a glass, you see droplets outside. Or when you put an AC, you see the tube going outside and water is coming out. Why it is happening? Because when you lower the temperature, condensation happens. So same thing happens in the atmosphere. As the warm and moist air being lighter goes up, its temperature decreases. As the temperature decreases, there is condensation and small droplets form, and a bunch of droplets is known as cloud. Inside the cloud, there is a collision and coalescence between the droplets. They become bigger and they fall down due to gravity. Again, air currents take it up. This goes on for a number of times, and finally, when the drop is big enough, it falls down as rain. Then in India, rain happens due to southwest monsoon or any other monsoon. Can you clarify, please? Yeah, and you see, rain can happen because of many reasons. It can happen because of cyclone, like we recently saw in the Arabian Sea when Gujarat and Rajasthan got huge amounts of rain, very heavy rain, and even extreme rain. You have rain due to orography, due to mountain, and then your monsoon. So India basically have two kinds of monsoon. The present monsoon, June, July, August, September, which affects a very large area of India. And then you have northeast monsoon. When winter season comes, you have Siberia and Himalayan regions, very low temperatures, and oceans are comparatively at higher temperatures. So low temperature there is high pressure, and higher temperature is low pressure. So now winds from high pressure start moving towards low pressure. That is, they are coming from the northeast direction and affect the coastal areas of Tamil Nadu, Andhra, and Karnataka. So these are the major systems, you can say, which give you rainfall. Next question. So one question is that many times we are hearing that term El Nino. Kindly explain the term. See, El Nino is not very simple in the term, but El Nino basically means abnormal warming of Pacific Ocean off the coast of Peru. That means it's basically abnormal warming of Pacific Ocean. And this, scientists have said, is not only influencing the weather in that area, it is influencing area of the globe. It is influencing our monsoon. It is influencing Australia. It is influencing, even Americas and those other regions of Asia also. So it has wide, this we call this teleconnections. Although these places are far off, but still weather gets influenced. Now, people say that because there is El Nino, so your monsoon is going to be bad. But there is no one-to-one relationship. There are years when El Nino was there, monsoon was bad. There are also years when El Nino was there and monsoon was normal. So there is no one-to-one relationship. So this time the scientists are saying there will be El Nino somewhere in August onwards that may affect our monsoon. But then there are some other phenomena. Monsoon itself is monsoon is a bigger system than the El Nino. So it's a very complex system. That's what further more research is also required. Yes. Next. The question is like in ancient literature, we have heard about 6 seasons. Grishma, Varsa, Sarad, Hemant, Shishir, but now these days in modern science says 4 only.
So is this due to changes in seasons or due to course of time? नहीं, see, it's mainly the classification done. Basically ये सब चीजें तो हैं जी, ये हैं सब चीजें, वो हमारा ये जो हम फॉलो कर रहे हैं अभी मेनली फॉलो द इंग्लिश सिस्टम। हम लोग तो कैलेंडर भी फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर, हम तो वो वाला अपना फॉलो नहीं कर रहे हैं ना कैलेंडर, वो अलग सिस्टम है, वो अलग कैलेंडर है। हम सिर्फ समझने के लिए हम लोगों ने इसको 4 सीजन में बांट दिया है, बट हमारा वो सिस्टम भी काम कर रहा है, बट दैट्स व्हाट, बट इनफैक्ट आवर सिस्टम इज मोर बेटर देन द इंग्लिश सिस्टम। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, वो सारे जो हैं जुड़े हुए हैं मौसम से, जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। और जो इंग्लिश कैलेंडर है वो हमें प्रकृति से हमारे को दूर ले जाता है, वो उसके पता ही नहीं चलता 1 जनवरी 2 जनवरी 5 जनवरी। हमारे वहां कहता है आज एकादशी है, आज पूर्णमासी है, आज ये है, और आज हमारा ये चीज है। तो वो सारी चीजें जो हैं, इसलिए हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको भी हमें बनाए रखना है और मॉडर्न साइंस को भी साथ लेके चलना है। एक प्रश्न है सर, बादल फटने के क्या लक्षण हैं? जी, बादल देखिए, बादल फटने का क्या बेसिकली क्या कोई रियल सेंस में बादल नहीं फट रहा है। ओनली थिंग इट मीन्स इज इट्स ए जनरल टर्मिनोलॉजी बना दी। इसका मतलब है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, द एंटायर क्लाउड डंप्स इट्स मॉइस्चर ओवर अ स्मॉल एरिया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट लीड्स टू devastation. That's called cloud burst. Someone has asked, sir, do you think that Yamuna river front is a good planning in Delhi? No. See, riverfront, you are trying to beautify, putting cement structures there. That is not, this is unnatural. This is what they have done in Gujarat. This is what they have done in Lucknow. See, you are just beautifying. See, nature, what you have to do, you have to restore. See, river को आपने बांधना नहीं है। पानी, नदी का पानी साफ कैसे होता है? चलने से, अविरल। और यदि रुक जाएगा तो खराब हो गया। और आपने दिल्ली में यमुना को क्या बांध दिया, पोखला बराज और वजीराबाद बराज के पानी, इट्स अ डेड वाटर। सो रिवर फ्रंट इज नॉट ए गुड आइडिया। वहां कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसके यहाँ सिर्फ आप वेजिटेशन लगा सकते हैं। पुट वेजिटेशन देयर एंड लेट इट बी नेचुरल, डोंट कंस्ट्रक्ट देयर। The next question is, can artificial rain change the natural system of rainfall? See, artificial rain is a I mean type of experiment. I mean, scientists have been doing, they have doing it from the 60s onwards. In 70s, India Meteorological Department has also done these experiments to enhance precipitation. बारिश बनने के लिए, for rain to happen, you should have small minute particles, which could be pollen grains, which could be proteins of the bacteria, it could be dust particles on which the condensation occurs, जिसमें पानी condense होता है उसके ऊपर. So those condensation nuclei, if they are not there but moisture is there, then rain doesn't happen. So sometimes people think if they add silver iodide crystals or sodium chloride system particles into atmosphere, they will enhance the condensation nuclei and may lead to rainfall. We need to keep doing research, reduce the cost of this thing, and we should know where it is possible, where it is not possible. And then there will be fights also in between. If suppose Haryana, Punjab does the experiment, tomorrow Haryana will go to the court that the clouds were coming on my side and Punjab has done this experiment and rain has fallen. There will be wars. Already there are river wars between Karnataka and Tamil Nadu, Punjab, Haryana. Similar more wars will happen. So better be careful. So the next question is, what are the reasons for tremendous increase in cases of thunderstorm and lightning? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सी अभी भी इस समय कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। रिमेंबर, अर्थक्वेक भी अभी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक आ रहा है। These are natural phenomena, और ये मैंने बताया, ये अर्थ का एक मैकेनिज्म है टू बैलेंस इटसेल्फ। तो ये थंडरस्टॉर्म होते ही रहते हैं। हाँ, कहीं जगह जहां आपने थोड़ा सा हीटिंग ज्यादा कर दी है, कंक्रीट ज्यादा बना दिया है, तो वहां थोड़ा सा इनका मानना है कि ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं, राइट? वो है, बाकी कोई ऐसा कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। एक प्रश्न है सर, पृथ्वी, आकाश व अन्य ग्रहों के प्रदूषण का हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे मापते हैं? राइट, देखिए
क्या फर्क पड़ता है, तो वो तो एक हम बात ही कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर दी हमने, ओजोन की बात कर ली हमने कि ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे क्लाइमेट सिस्टम्स को इफेक्ट कर रहा है। तो यही हो गया। दूसरा हो गया ओजोन का। मैंने कहा कि ओजोन जो है नीचे कम होती है और ऊपर ज्यादा होती है। ऊपर ज्यादा मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर में, बट ओजोन नीचे बढ़ना मीन्स खतरनाक है हमारे लिए, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बढ़ते हैं तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो ये एक पोल्यूटेंट है, इट अफेक्ट हमारे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर सकती है, प्लांट्स के क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इट हैज मेनी मेनी इफेक्ट ऑन दिस। अब देखोगे आप नाक में भी आप साफ कर दोगे, आप देखोगे काला निकलता है। छत पे आप चले जाएं तो आप देखेंगे पूरा काला परत पड़ी। घरों में परत, पंखों पे इतनी जल्दी परत आ जा रही है। तो पोल्यूटेंट्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो अवेयरनेस लोगों पे आ नहीं पा रही है। लोग उसके लिंकेज को नहीं समझ रहे। एटमॉस्फेयर हैज नो बाउंड्रीज, पोल्यूटेंट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो एंड इट इज अफेक्टिंग आवर लाइफ। सो वी हैव टू इंश्योर दैट डेवलपमेंट भी हो, मगर ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। पोल्यूशन हम कम से कम करें, मगर लोगों को समझ नहीं आ रही। कंस्ट्रक्शन आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, निरंतर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। घर ठीक ठाक है, फिर तोड़ के नए टाइल्स लगेंगी, टाइल की घिसाई हो रही है, लोहा कट रहा है वहीं पर। दैट इज एडिंग टू द पोल्यूशन। तो यू हैव टू चेक दैट। So next question is increasing population cause climate change? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा लोग होंगे तो उनकी जरूरतें भी ज्यादा होंगी। When there are more people on the planet Earth and continuously increasing, you need more facilities for them. You need houses for them. You need transport for them. You need food for them. You need clothes for them. So when your population is continually increasing, you have to increase your industrial, production also. So when you increase that and you don't check pollution, so there is a problem. So pollution will increase with this thing. Definitely population this thing. But if you change your lifestyle, जब भी आपकी बात होती है one earth, one planet and one family, जो कि G20 का हमारे मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज हो, पहले हमें कहता था कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण खाओ, जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। अब आजकल क्या हालत है, कुछ भी है, लोन ले लो, कार भी खरीद लो, घर भी खरीद लो, किस्तों पे देते रहेंगे और मौजें करेंगे। सो वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं लगाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। Someone has asked, what is cloud seeding? Is it right or wrong? Cloud seeding is artificial rain जो करते हैं, that for that what we do is cloud seeding. That means there is a moisture in the atmosphere, there are clouds, and then we are increasing the further collision and coalescence and condensation. So उसके लिए we put either sodium chloride, is common salt, or silver iodide crystals. So that when we add these particles, that's called cloud seeding. Very good answer, sir. Someone has asked, is there any impact of mobile tower on climate? See, देखिए, मोबाइल टावर में बेसिकली आपकी रेडिएशंस आ रही है। तो जब रेडिएशंस आएंगी तो नेचुरली थोड़ा वार्मिंग तो करेगी। आप खुद ही आप देख लीजिए कि यदि आपके घर के सामने मोबाइल टावर होगा तो आपके यहाँ हेडेक होगी और आपका टेम्परेचर, आपको ज्यादा फीलिंग होगी। तो रेडिएशन तो ऐड कर रहा है। देखिए, कोई पहले पर तो मोबाइल टावर अपने आप कर रहा है, ऊपर से रेडिएशन निकल रही है उसमें से। तो डेफिनेटली दीज थिंग्स, वैसे मोबाइल टावर हो, टीवी टावर हो, वाटर का टैंक हो, बड़े, एवरीथिंग वन इज, वो आपको बिकॉज ऑफ लैंड यूज करके ही वो कर रहे हैं, ऊपर से रेडिएशन है, तो इट डज कंट्रीब्यूट। So then how can decrease the greenhouse gas effect in agriculture sector? How can we decrease the greenhouse gas effect in agriculture sector? Yes, very good. For that, we have to see where all we are utilizing like either diesel, petrol, whatever we are burning while doing the various आपने field preparation कर रहे हैं, you are preparing the field. So what are the inputs? Fertilizers. So can you find some organic fertilizer instead of inorganic fertilizers? Can you have गोबर, गाद, पत्ती की जो आपकी खाद होती है, that kind of thing, biomass developed fertilizers?
So organic fertilizer. So you have to replace inorganic fertilizer with the organic. That is why now people all over the world, people are talking about organic agriculture now. So we have to slowly replace. And similarly, instead of your tractor where you are using diesel and all, if you have solar powered tractors, so these are some of the ways you can reduce the greenhouse gases and its impact on the climate. Sir, it's a very long question. I will just read it out. No Sir, problem. these years of destruction done by humans to the climate lead to the current climate situation. Then what will be the assumption that how much time would it take to normalize the situation? As in news too, we get to know that by 2030, this much destruction would happen. But nobody talks about the SDG goals solution to achieve them. Yes, very good, very good. Very nice question. See, first thing, let us analyze it. There is no one fixed thing, by 2030 or now government, in fact, is talking about, the Indian government has given, sort of their own set goal that by 2000, I think 70, they will have carbon neutral economy. Similarly, other countries also have to decide this thing. When everyone decides together and makes their economy carbon neutral, that means they are no more emitting any carbon in the atmosphere. One. Second thing, whatever is there, that also they capture. Right? So carbon neutral economy, the carbon economy 2070, that means another almost how much? 47 years to go. But then also we are not sure, because already we have pumped so much. So nobody has answered that, like if we take all these actions, that we will be able to restore to normalcy. It's a very difficult thing to do it. It's not this thing. One thing. Second thing, you are right. Sustainable development goals. Why sustainable development goals were decided? What was the last year for that? 2030. And already 2023. Only 7 years left. We have failed miserably. Some country might have taken decision, but most of the countries have failed miserably. There is hardly action seen anywhere. Will you be able to achieve these 17 goals by the 2030? No. So that was our priority. That was an emergency. And we will not be able to achieve them. And we will say now in 2030, 40 we will give, then 2050 like that. So where there is a will, there is a way. We have technology, we have knowledge, but only I think somewhere the will is missing. And strict action. Implementation of the laws. Pollution laws are there. One should not pollute either river or water or air, but धड़ल्ले से हो रहा है. ऊपर से सिर्फ मोटी-मोटी अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, but action नहीं दिख रहा है. And the same type of question is, sir, that if government restrict producing plastic items like carry bags, containers, and plastic water bottles, government should put fine or penalty for using and selling and producing. It will protect our environment in highest level. But why government is not taking action? Someone has just see somebody. एक तो ठीक बात है. Himachal, if you go to the Himachal government, they have very strict laws. They fine immediately 500 rupees. Okay, so to some very large extent they have controlled. But still you have wrappers of kurkure or chocolates, toffees, those still pan parag and all still are there. Other polythene they have checked. But why can't they check this also? So there's no will from the government side. तो गवर्नमेंट को रोकना है ना पहले, और उसको रोकने से पहले दे हैव टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव, एंड अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. सब लोग थैले लेके जाएं अपने घर से. आई ऑलवेज कैरी माय ओन बैग विद मी. बट ठीक है, कई बार नहीं, हम प्लान नहीं करके जाते तो इमीडिएटली पॉलिथीन ले लेते हैं. बट ऑल शुड स्टार्ट फॉलोइंग. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलवेज कैरी. आजकल फोल्डिंग बैग्स आ गए बड़े अच्छे. आप चाहिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, आप उनके स्टोर्स में चाहिए, छोटा सा बैग आपकी पॉकेट में आ जाएगा. आप उसको खोलेंगे तो बड़ा हो जाएगा, उसमें आप सामान ले आइए. तो हमेशा अपनी, जब भी आप बाहर जाए, हमेशा अपनी पॉकेट में एक बैग जरूर रखें. बट नाउ एवरी वन थिंग इज इन सेपरेट पॉलिथीन, एंड दैट पॉलिथीन इज बीइंग थ्रोन, एंड देन सम ईदर द क्लीनर ही कम्स एंड ही बर्न्स इट, और ही गोज एंड डंप्स इट समवेयर. वहां जाके फेंक देता है उसको. फिर वही प्रॉब्लम होता है. फिर सारी जगह चले जाओ, सड़कों के किनारे चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको गंदे पॉलीथीन हर जगह दिख रहे हैं. वो डिसइंटीग्रेट हो नहीं रहा है. अब पूरे एनवायरनमेंट को गंदा भी कर दिया उसने, पोल्यूट भी कर दिया है.
तो इसका मतलब सर एक तरह से अगर सरकार के ऊपर हम दोषारोपण करें तो अपने आप को भी झांकना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, हम इतना हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, इफ यू स्टार्ट सेइंग आई विल नॉट टेक पॉलिथीन बैग, आई विल कैरी माय ओन बैग, इफ एवरीबॉडी टेक्स अ डिसीजन, उनको बंद करनी पड़ेंगी अपनी फैक्ट्रीज। तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन के साथ ही हमें 2 सीख भी लेनी होगी सर आपके इस माध्यम से, कि हम कम से कम 300 पार्टिसिपेंट्स हैं, 300 लोग भी अगर प्लास्टिक का कैरी बैग कम कर दें और ये छोटे कम दूरी के जगहों पे अगर जो हम बाइक को अगर यूज करते हैं उसको कम कर दें तो कुछ कम से कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन नहीं, अपना लाइफस्टाइल को बिल्कुल सिंपल कर दीजिए। जी। चेंज योर लाइफस्टाइल, यूज लेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज लेस ऑफ वाटर, यूज मोर वॉकिंग करिए, ज्यादा वॉक करके चलिए, लेस अपने गाड़ियां यूज करिए, रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट एंड इंप्रूव योर हैंड प्रिंट, दैट इज एक्शन टू रिड्यूस पोल्यूशन। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वेरी गुड सर। लास्ट क्वेश्चन इज सर दैट किसी ने पूछा है, अगर हम ये जानना चाहें एक लाइनर अगर क्लाइमेट चेंज के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहें तो क्या हो सकता है सर? क्या क्लाइमेट चेंज क्या है? See, you can't have a, see, change means change in climate, and climate तो change होता ही है, climate change, so you can't have a one liner, you know, this is a problem, that you can't simplify certain things, and that is why some people have simplified the thing कि climate बदल रहा है, it's a climate change. Climate change is a change in the climate due to human factors, कि human activities के कारण जो changes बदलाव आ रहे हैं, that is the climate change. एंड आई एम सेइंग कि यदि आप मान लीजिए जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में, आपने 100 रुपए की सब्जी खरीदी और उस सब्जी वाले से आप क्या मांगते हैं सब्जी खरीदने के बाद? अच्छा आइडिया आपको? धनिया मिर्ची फ्री दे दीजिए। तो वो धनिया मिर्ची जो उसने दिया वो 5 रुपए का है और सब्जी आपकी मान लीजिए 95 रुपए की थी, तो 95 रुपए जो है वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, 5 रुपए जो है क्लाइमेट चेंज है। मगर ये लोग मत दे रहे हैं, पूरा ही 100 रुपए को बोल दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, try to know what is climate variability and what is climate change. Climate change is very small component due to human induced changes. One. Second thing is हम climate variability को आज तक 500 साल से 1000 साल से टैकल करते आ रहे हैं, राइट? हम आगे भी कर लेंगे, ये क्लाइमेट चेंज को भी टैकल कर लेंगे, जब उसको टैकल कर रहे हैं हम उसको भी कर लेंगे। तो आई एम नॉट पेंटिंग ए डूम्सडे सिनेरियो कि डूम हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ये डरा रहे हैं आपको सारे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऐसे कोई प्रलय ऐसी नहीं होने वाली है, बट यस वी नीड टू रिड्यूस पोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग पोल्यूशन ज्यादा करो, रिड्यूस, मेक योर लाइफ सिंपल। 2 ही 3 पैंट शर्ट करा के गुजारा चल सकता है, क्या प्रॉब्लम है? दिखावा क्यों करना है? वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने मतलब जितना टेंशन में हम इस सब्जेक्ट को ले रहे थे, आपने इतना लाइट कर दिया इस माहौल को कि लग रहा है कि शायद हम इस ह्यूमैनिटी को खूब अच्छे से अपने लाइफ को गुजारेंगे। नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि आगे आने वाला समय क्या होगा। तो आपने इन सारे प्रश्नों का इतने अच्छे तरीके से और बिल्कुल संक्षिप्त और बिल्कुल सरल रूप में आंसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Good evening to all. So I deem it a great honor that I've been asked to propose the formal vote of thanks. First of all, I would like to extend a very hearty vote of thanks to our resource person for today, Dr. Anand Sharma, who took out time from his busy schedule and taught us about climate system basics and helped making this webinar very interesting and engaging, sir. So you very briefly explained about atmosphere, stratosphere, biosphere, lithosphere, and cryosphere, which impacts our climate, greenhouse effect and greenhouse gases, and about the ozone layer and its depletion. You talked about climate projections being very complex and that work is still going on the same subject. You stress about the importance of planning and development and the need for a Earth system model. So thank you so much, sir, for today's session. Thank you. You are mute. Unmute yourself. Sorry. So I would also, so thank you so much, sir, for an engaging session. I would also like to extend a special vote of thanks to Ranveer sir and Anand sir for managing the session very well from behind the scenes.
And I express my sincere thanks to the e-certificate course coordination team, Ms. Ranjana ma'am and Ajit sir, and the whole VYK team for their constant support. Last but not the least, I would like to thank all the wonderful participants for their active participation and great enthusiasm throughout the session. Once again, I thank you all for your cordial cooperation. Thank you. Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.